Hello to all 8 standard students. So today we are going to do our chapter number 15 from our history civics books of our class 8th ICSE board. And the chapter name is Agencies of the United Nations. So let's start this chapter, and in this we are going to deal. As in the previous video, I have told you what the United Nations is and what is its use, basically why it is set up, okay, and why it is formed. And also we have talked about all its principal organs which work, okay. Now in this video we are going to talk about the agencies of the United Nations, or the programs that are run by the United Nations. So let's start. So the United Nations takes to promote economic and social progress. We have learned this, that the United Nations is set up so that there must not be any world war again, and also it increases or promotes the economic and the social progress. It promotes better standard of living, employment, observance of human rights, and freedom for all. A number of specialized agencies have been set up to help UN achieve these goals. So, in the previous video, we have talked about that UN has many objectives, many principles, many aims. Okay, so UN के पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा goals हैं जो उसको complete करने हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना, इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड करना, उसको अच्छा बनाना. तो बहुत ज़्यादा गोल्स हैं हमारे पास, हमारे यूनाइटेड नेशंस के पास. ठीक है, तो उसको, जो वो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एजेंसीज़ बनाई, अपने प्रोग्राम्स बनाए, जिससे कि वो अपने सारे गोल्स को अकम्प्लिश कर सके. Okay, now these are autonomous organizations. Autonomous means जो regular base पे काम करती हो. Organization that work under the guidance of the United Nations. In this lesson, we will read about a few of these agencies. So let's talk about the agencies of the United Nations. So the World Health Organization was established in 1948. So these dates are very much important. So the World Health Organization was established or set up in 1948. It is one of the most important agencies of the UN. It aims to improve healthcare facilities throughout the world, and its headquarters are in Geneva. तो अभी यहाँ पे आपको 4 चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़, full form of WHO, World Health Organization. Second thing, when it is established in 1948. Third, what is its aim? So it aimed to improve healthcare facilities throughout the world. And the fourth thing is where is its headquarters? So it is in Geneva. Now next. So what are the functions? तो WHO के फंक्शंस क्या है? फंक्शन यानी इसके काम क्या हैं, ठीक है. सो फर्स्ट, टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड ही होंगे. नाउ सेकेंड, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. एंड थर्ड, टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, housing, sanitation, and hygiene. So all these 3 points you have to learn, and these are the functions of the WHO. Now let's move forward, and we are going to talk about ILO, that is International Labour Organization. And first thing is the full form, International Labour Organization. Second is the year, that is 1919, as an autonomous wing under the League of Nations. तो पहले ये League of Nation के अंडर बनाई गई थी 1919 में, बट इसको हमने फिर हमारे यूनाइटेड नेशन जब बना उसके अंदर भी इस प्रोग्राम को हमने चालू किया, और वो ईयर था 1946. ओके, सो 1946 इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन. सो पहली एजेंसी अगर यूएन की पूछी जाए तो वो क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. It seems to promote social justice for workers and ensure decent working and living conditions for them. And its headquarters are also in Geneva. Okay. Now, what are its functions? So, to create international labor standard for wages. Wages क्या होते हैं? जो आपने सुना होगा, जो मजदूरी करते हैं तो उनको क्या मिलता है?
पर डे का उनको पैसा मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में दिहाड़ी कहते हैं. व्हाट डज इट मीन कि पूरे दिन वो मजदूरी करते हैं, उनको एट लास्ट मतलब कि दिन के लास्ट में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, लाइक 500 और 1000. सो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बनाना वेजेस के लिए, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन, इंश्योरेंस, सेफ्टी एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड सो ऑन. Second, to increase research in the field of social and labor policies. And third is to create awareness among workers about their rights, कि जो वर्कर्स हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट करना कि उनके क्या राइट्स हैं और उनका क्या मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका क्या मेजर रोल है. ओके, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड यू. Now, a third agency is FAO, that is the Food and Agriculture Organization. First thing is you have to learn the full form. Second is the year, that is 1935. It fights hunger and malnutrition. Malnutrition का मतलब undergrowth, undernutrition by improving the agricultural output, and its headquarters are in Rome. तो ये important है क्योंकि पहले दो के कहाँ पे थे, जेनेवा में थे, और जो FAO है उसके कहाँ पे हेडक्वार्टर्स, दैट आर इन रोम. नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ FAO, तो मेनली किससे होंगे, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंक्शंस होंगे. सो द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द आउटपुट. तो जो UN की ये एजेंसी है FAO, ये क्या कर सकती है, असिस्टेंस मीन्स ये हेल्प कर सकती है, एडवाइस दे सकती है इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको, ताकि वो अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकें. नेशनल फोरम फॉर डिबेट ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू. फोरम का मतलब क्या होता है, अ प्लेस और हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके मिले और वहाँ पे वो अपने जो डिसीजंस है, अपने जो इश्यूज़ हैं और अपनी जो सोच है, ठीक है, उसको वहाँ पे आके वो दिल शेयर विद ईच अदर. थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेंबर कंट्रीज़ इन टाइम्स ऑफ फूड क्राइसिस. मतलब कि जब भी मतलब भूख काल हम कहते हैं जिसे, मतलब कि फूड क्राइसिस होती है, खाने की कमी होती है, उस टाइम पे ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड द फोर्थ वन इज यूनिसेफ. So the United Nations Children's Fund was established in 1946. Year याद रखना 1946. Why? To provide relief to children affected by the Second World War. It was intended to be an emergency organization. That is why the acronym is in full form. Original stated for United Nation International Children Emergency Fund. But अभी इंटरनेशनल और एमरजेंसी को चेंज करके सिंपल हमारा बना दिया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. ओके, इट हाउएवर कंटिन्यूड इवन आफ्टर द वॉर. It's wrong. So it strives to improve the quality of life of children and women all over the world. And its headquarters are in New York. Okay. So its headquarters are in New York. Now what are the functions of the UNICEF? So क्या होगा, हमें पता है कि चिल्ड्रन या वुमेन से रिलेटेड होगा. सो फर्स्ट वन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. पहली चीज़ कि जो चाइल्ड लेबर है, मतलब कि जो 14 ईयर्स से कम बच्चे हैं उनको मतलब उनसे काम ना करवाया जाए. और सेकंड, जो गर्ल चाइल्ड के लिए डिस्क्रिमिनेशन होती है गर्ल बॉय में, वो ना हो. सेकेंड, टू अम्यूज चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेज लाइक मीजल्स हो गया, डेफ्थीरिया हो गया, हमारे पास पोलियो हो गया, एंड वी हैव लाइक आई मस्ट से दैट TB, tuberculosis. So these are some of the diseases, killer diseases. There are mainly 6 killer diseases declared by the UNICEF and the WHO combined, and what they did is they amuse the children. Okay, you have seen that you have a whenever there is your younger brother or sister in your home or someone in your in your surroundings, you could see that whenever they were born they were given the injections. Okay, so that are mainly the vaccines provided by the UNICEF. Okay, and it is given to all the children all over the world. That are basically the countries which are the member countries of the United Nations. Now the third
function is to help children and women during epidemics, wars, or natural disasters. So basically, helping the children and women whenever they need it. Okay. Now, the next one is UNESCO, the fifth one. So it is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and it is founded in 1945. What its objective? Its primary objective is to promote cooperation among nations, particularly in the field of education, science and culture. Its headquarters are in Paris. Headquarters याद रखना है, डेट याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है और एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द यूनेस्को. तो तीन फंक्शन पढ़ेंगे हम. सो द फर्स्ट वन इज that to work toward achieving education for all, particularly universal primary education. तो प्राइमरी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए. सेकेंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट रिसर्चेज एंड साइंस थ्रू बुलेटिन एग्जीबिशंस एंड जर्नल्स. और इसकी एक बहुत फेमस मैगजीन आती है, उसका नाम है COURIER, Courier. Okay, every month they release it. So the third one is to help member countries preserve the cultural heritage. Like, I have told you, like the UNESCO is helping India basically, so that India would be preserving the Taj Mahal, because we know that due to the Mathura oil refinery, the Taj Mahal is becoming yellow in color. Now what the UNESCO is doing, it is helping India to remove that yellowish part from the Taj Mahal. So this is a very important most important program that is working out in India right now. Okay, now let's move forward and we are going to talk about the UNDP. Full form, United Nations Development Program. Year 1965. It promotes cooperation among nations to help people lead the better life. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है. ओके. नाउ इसके फंक्शंस क्या हैं? सो टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फील्ड्स. सेकेंड, टू हेल्प कंट्री इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट. और थर्ड क्या है? साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज को प्रमोट करना. ओके. सो एजेंसीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. सो ऑल एजेंसीज ऑफ द UN हैव डन नॉट वर्दी वर्क ओवर द ईयर्स इन their रिस्पेक्टिव फील्ड्स. मतलब अपनी अपनी फील्ड्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हाउएवर अ लॉट मोर स्टिल नीड्स टू बी डन. लेकिन फिर भी हमें और बहुत कुछ करना है. होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज इज रिक्वायर्ड टू डू जस्टिस टू द वर्क अंडरटेकन बाय द एजेंसीज. नाउ, so this is all for this video, and I think you loved watching this video. If you did it literally, then like this video and just have a good quote or like a good comment downside in the comment section. I'll be I'll say that really happy to see your response out there in the comment section. Okay, so in case you have any query or doubt, you can write that as well in the comment section. I'll be there to respond as soon as possible. Okay, so you could subscribe to our channel Icse Easy Learn if you have not done it yet. Okay, and you could check out our civics playlist, which is we have covered all the topics of the civics of our class 10th ICSE board. So yeah, we have completed it, and now we are just moving towards other subjects as well, and we are covering all your subjects hope worthy. So thank you, and we will meet you in the next video. So bye bye.